Probability distribution, and the first concept is random experiment. Probability actually हमको पहले भी 9th 10th में भी रह चुका है, 11th में भी हम लोगों ने किया था. But now we are not doing probability, we are going to do probability distribution. So random experiment. What is random experiment? It is an experiment which we do under similar circumstances, but every time we are going to get different results. For example, I may give, so many people might give a CA foundation exam with me, but every person will have a different result. There can be predetermined result. I mean, there can be only 2 results, pass or fail. लेकिन मेरा result क्या आएगा और किसी और का क्या आएगा, इसमें हमको हमारा कोई control नहीं. For example, if I toss a coin, I know that if I toss a coin, I can get head or tail. But now when I'm tossing coin for this very time, what exactly I'm going to get, I don't know. This is called as random experiment. Random experiment is an experiment for which we will get different outcomes. Experiment that gives different outcomes each time we perform it. So what is sample space? A set of all possible outcomes of random experiment is called as sample space. सारे पॉसिबल आउटकम का जो एक सेट बनेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस. और हर एलिमेंट को हम लोग बोलेंगे सैंपल पॉइंट. Now what is event? So for example, say tossing a coin is an random experiment. So what will be the sample space? It will be head or tail. Throwing a dice is a random experiment. So what will be the sample space? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now, if I want any one of the sample, and this head and tail, this is called a sample point. These are called a sample point. Now, if I want any one or more than one sample point to occur, then it is called as event. So event is occurrence or non-occurrence of more than one sample point. जब इसमें से मैं बोलूंगी कि हेड आना चाहिए या 3 आना चाहिए, तो वो क्या होता है, इवेंट हो जाता है. और प्रोबेबिलिटी हम लोग इवेंट की निकालते हैं. ओके, हम लोग प्रोबेबिलिटी किसकी निकालेंगे, इवेंट की. प्रोबेबिलिटी इज chance of occurrence of the event. Probability is generally calculated. Suppose A is the event, then probability is calculated as number of times A can occur upon total number of times random experiment can be done, upon number of times random experiment can be done.
This is called as probability. प्रोबेबिलिटी का इतिहास बहुत ही पुराना है, बहुत पहले टाइम से हम लोग प्रोबेबिलिटी को यूज करते हैं। आई वोंट बी रॉन्ग कि इसकी पहली स्टडी जो है ये रशिया में शुरू हुई थी। रशिया में बहुत सेंचुरीज पहले बात करेंगे हम लोग इसकी, बहुत बहुत पहले गैम्बलिंग बहुत होता था और गैम्बलिंग के लिए प्रोबेबिलिटी का ज्यादा स्टडी शुरू किया गया था। लेकिन जब उसको ज्यादा स्टडी किया गया, इटली में इस पे ज्यादा काम हो, तो जब इसको बहुत ज्यादा स्टडी किया गया और कुछ बेस वगैरह जैसे जो स्टैटिस्टिशियंस थे इन्होंने उस पे बहुत ज्यादा काम किया, तो पता चला कि इससे सिर्फ गैम्बलिंग में नहीं, बहुत जगह पे यूज किया जा सकता है, स्पेशली इन फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग प्रोबेबिलिटी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। एंड दैट इज व्हाई वी स्टडीड प्रोबेबिलिटी फर्दर। एंड नाउ प्रोबेबिलिटी इज नॉट ओनली यूज्ड इन गैम्बलिंग, गैम्बलिंग में तो बहुत ही पीछे छूट गया। अब तो वो इंडस्ट्रियल डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन, प्रोडक्शन डिसीजंस, ऐसे सारे फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग, बहुत सारे डिसीजन मेकिंग में ये काम में आता है, बहुत सारे प्रोजेक्शन एस्टिमेशन में प्रोबेबिलिटी काम में आता है। लेकिन सिर्फ बेसिक प्रोबेबिलिटी थियोरी वहां पे काम में नहीं आती है। जो ज्यादा काम में आता है वो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो हम लोग सीखने वाले हैं। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने बेसिक सीख लिया है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या होता है, इवेंट क्या होता है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है। अब हम लोग देखेंगे रैंडम वेरिएबल क्या होता है, और वहां से आगे हम लोग लेके जाएंगे उसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तक। ये पार्ट आपको फाउंडेशन में भी है। We have random variable binomial Poisson in foundation also. So random variable, what is it? It is a function from the sample space S to the set of the real numbers. Actually, random variable is the suppose X is a random variable. It assumes different values of outcome of random experiment. रैंडम एक्सपेरिमेंट के अलग अलग आउटकम की वैल्यूज को रैंडम वेरिएबल एज्यूम करता है। अब रैंडम वेरिएबल दो तरह के होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और एक होता है कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अब ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जो है वो सिर्फ होल नंबर्स एज्यूम करता है, फ्रैक्शनल वैल्यूज नहीं। Random variable X is said to be discrete if it takes finite or countably infinite values. Thus, discrete random variable takes only isolated value. It takes finite or countably infinite whole isolated values. In the sense, it will take the values such as 1, 2, 3, 0, -1, -2, or whatever it is, but it will never take fractional values. And continuous random variable is a random variable which takes fractional values. It is continuous. It can take any value in the given interval. It takes fractional values. तो अगर मैंने बोला कि if X represent the number of students present in the class, so there can be no student, there can be 1 student, 2 student, 3 student, but I cannot have 2.5 students in the class. So here X will become discrete. लेकिन अगर वही मैंने बोला कि students की height, तो स्टूडेंट की हाइट 5 फीट से लेके 5-6 तक कुछ भी हो सकती है, तो 5 फीट, 5.1, 5 फीट 1 इंच, 5 फीट 2 इंच, लाइक दिस इट कैन गो ऑन कंटिन्यू, और उसके बीच में भी बहुत सारी वैल्यूज जो है वो देंगे।
ऐसा तो नहीं है ना कि क्लास में बच्चों की हाइट एक तो 5 फीट होगी या 6 फीट होगी, ऐसा नहीं है, बीच की भी सारी वैल्यूज आएंगी, तो इसे कहते हैं कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। Now we'll talk about probability distribution. What is probability distribution? It is a distribution of all values of random variable. Now, what are all values of random variable? They are all outcomes of random experiment with their corresponding probabilities. A distribution of all values of random variable, that is all outcomes of random experiment with their corresponding probabilities, is called as random distribution. It is given X and P. So X will have different outcomes, that is X1, X2, X3, and P will have different outcome, P1, P2, P3. And this is your probability distribution. This is the probability distribution. All the values of random experiment along with their probabilities. If X is discrete, then the probability distribution is called as probability mass function. And if X is continuous, then probability distribution is called as probability density function. The probability mass function, it is also denoted like this PDF. Probability mass, this is mass function, so it is PMF, PMF, and this is PDF. Probability mass function, probability density function. Probability mass function ये discrete random variable के लिए होता है, और probability density function continuous random variable के लिए. अब हम लोग probability mass function के बारे में थोड़ा सा बात करें. Probability mass function. There are two conditions for probability mass function. First condition is summation of all probabilities should be equal to 1. That is, total of all probabilities should be equal to 1. And second is, every probability should be greater than 0, or it can be equal to. That is, every probability of every random variable, or every value of the random variable, every probability should be non-zero. Obviously, probability is always in between 0 and 1. So it will always be in between 0 and 1. Okay. So it's very essential that whatever is the probability distribution, the total should be 1 and probability should all be positive. If it is not, then it will not be the probability mass function.
अब इसमें कुछ और भी कंसेप्ट है जैसे क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू वेरिएंस, लेकिन वो हम लोग अभी 8.1 में जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे हम लोग उसको करते रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट अगर हम लोग इकट्ठा सीख लेते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो हम लोग अब 8.1 शुरू करेंगे एंड फिर जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन आता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू वेरिएंस आता है, वो हम लोग तब सीख लेंगे। Exercise 8.1. Please sit with your textbooks. Let X represent difference between number of heads and number of tails obtained when the coin is tossed 6 times. What is the possible value of X? X represent the difference between number of heads and number of tails obtained when a coin is tossed 6 times. So I will say the first one, that X represents difference between heads and tails. Okay. Now let us see the sample space. It is 0 head, 6 tails. We may have 1 head, 5 tails, 2 head, 4 tails, 3 head, 3 tails, 4 head, 2 tails, 5 head, 1 tail, 6 head, 0 tail. Okay, but this is the sample space, because if I'm tossing the coin for 6 times, I may get this results, different results. Now X represent the difference between the head and tail. So what will be the value of X? Number of head minus number of tail, this will be minus 6. Second, it will be minus 4. Third will be minus 2. Then 0. So this is for minus 4. Sorry, it's minus 6, minus 4, minus 2, 0. Then I'll have 2, 4, and 6. This is the value of X. They have asked what are the possible values of X? Possible values of X are minus 6, minus 4, minus 2, 0, 2, 4, 6. उन्होंने टेक्स्ट बुक में आंसर दिया 0, 2, 4, 6, लेकिन 0, 2, 4, 6 सिर्फ नहीं आता है। अगर हम लोगों ने एक हेड और एक टेल ऐसे पकड़ा तो हम लोगों को इतना बड़ा आता है। व्हाट आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ X? All possible values of X are minus 6, minus 4, minus 2, 0, 2, 4, 6. Now let us take second. This is just to understand what do we mean by random value, or what do you mean by the value of random variable. Now see the second sum. An urn. Urn means a bag. A bag will contain 5 red and 2 black balls. 2 balls are drawn at random. X denotes number of black balls. What are the possible values of X? Total तो 7 balls है हमारे पास. अब उन्होंने बोला है X denotes number of black balls. अगर 2 balls हम लोग निकाले तो क्या क्या हो सकता है? You may have 2 red ball, red black, black red, 2 black balls. Okay, the number of black balls, if X denotes number of black balls, then I can say the value of X is actually 0, because there can be no black ball at all. 1 and 2. This is the value of X.
Because we may have only no black ball, we may have only one black ball, and we may have two black balls. So only to help you to find out the value of x. Determine whether each of the following is probability distribution. Give reasons for your answer. ये बहुत ही commonly पूछा जाता है. You have to determine if each of the following is a probability distribution. हम लोगों के पास दो condition है probability distribution के. Let us take the first sum. x 0, 1, 2. अब x की वैल्यू निगेटिव हो सकती है लेकिन प्रोबेबिलिटी की नहीं. और दूसरी बात, प्रोबेबिलिटी हमेशा एड अप होके 1 हो जाएगी. Okay, so we'll write down in answer, if summation of probability is 1 and for every probability, if it is greater than or equal to 0, then given distribution is probability distribution. Now here summation p is 0.4 plus 0.4 plus 0.2, that is 1, and every probability is greater than or equal to 0, मतलब non-negative है. So yes, this is a probability distribution. So you will say given distribution is probability distribution. अगर probability में से इन दोनों में से कोई एक भी condition satisfy नहीं होती है तो वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. एग्जाम में आया तो आपको इतना लिखना पड़ेगा, पहले वो कंडीशन क्या है और फिर प्रूव करना पड़ेगा कि ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, देन इट विल बिकम डिस्ट्रीब्यूशन. इफ इवन वन ऑफ द कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, देन इट इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. फॉर एग्जांपल, टेक द सेकंड सम. इन सेकंड सम x is 0, 1, 2, 3, 4 and p is 0.1, 0.5, 0.2 minus 0.1, 0.3. Probability is negative. Even one of the probability is negative, it is not probability distribution. चाहे इनकी एडिशन 1 हो लेकिन ये नेगेटिव है तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. थर्ड ले लेते हैं हम लोग. अब इसको लिखना आपको सेम तरीके से है. ऐसे आप पहले ये 3 स्टेटमेंट्स लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी, you will just write down after the 3 statements, you will just write down as probability of x is equals to 3 is negative, therefore it is not a probability distribution. Third is x is 0, 1, 2 and p is 0.1, 0.6, 0.3. So yes, every probability is greater than 0 and their addition is 1, so it is a probability distribution. Like this you will do question number 3 of 8.1. आप हर प्रोबेबिलिटी को देखोगे, अगर x की वैल्यू या x या z हो सकता है, यहाँ पे ये नेगेटिव है तो चलेगा लेकिन प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती है. इसकी एडिशन नहीं करनी है हमको, प्रोबेबिलिटी की एडिशन करनी है, वो 1 होनी चाहिए. तो पहले 3 मैंने करके दिखाए हैं, आप नेक्स्ट 3 करोगे और यू विल राइट इट डाउन. फॉर एवरी टाइम यू विल राइट डाउन द प्रॉपर्टी एंड देन यू विल राइट डाउन. दिस इज द वे वी हैव टू प्रेजेंट इन द पेपर. ओके, distribution. Question 4 is to form the probability distribution. Find the probability distribution of number of heads in 2 tosses of coins. Number of heads in 2 tosses of coins.
If a coin is tossed twice, the sample space is head, 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 tail, tail, head, tail, tail. This can happen if I'm tossing two coins. Okay. So what are the number of heads? I may have two heads, one head and zero head. Now, if I say that X is a random variable denoting number of heads. So X will assume different value. X can be 0, X can be 1, or X can be 2. Now probability will be, what is the probability that out of 4 there will be no head at all? This. So it will be 1 by 4. Only one head, either head, tail or tail head. So 2 by 4. Two heads, again 1 by 4. So this is a probability distribution. हर probability 0 से बड़ा है और उसकी addition 1 है. मैं वापस बताती हूँ. अगर दो कॉइन टॉस होंगे तो क्या क्या आएगा, सैंपल स्पेस क्या होगा. एक तो आपको दोनों कॉइन पे हेड मिलेगा, या पहले पे हेड दूसरे पे टेल मिलेगा, पहले पे टेल दूसरे पे हेड मिलेगा, या फिर आपको टेल टेल मिलेगा. If X represent the random variable, then what are the values of X? X can be 0, 1 or 2. What is the probability? 0 की probability 1 by 4 है, 1 की probability 2 by 4 है, 2 की probability 1 by 4. This is your probability distribution. Now, the second sum in this. Number of tails in 3 tosses of coins. Number of tails in 3 tosses. Now, if there are 3 tosses, what are the different outcomes? I may get head, head, head. I may get head, head, tail. Head, tail, head. Tail, head, head. Tail, tail, head. Head, tail, tail. Tail, head, tail. Tail, tail, tail. We can get these many cases. See, if I'm tossing one coin, I get 2 outcome. 2 coins, I get 4 outcome, and 3 coins, I get 8 outcome. So I'm getting 8 outcomes here. Okay. अब उन्होंने पूछा है number of tails. So I'll say let X denote number of tails. Now, how many number of tails can we get? We may get no tail at all. Head, head, head आएगा तो tail तो आएगा ही नहीं. या फिर सिर्फ one tail. 1, 2, 3 cases में सिर्फ एक ही tail आ रहा है. या फिर 2 tail. 1, 2, 3. 2 tails आ रहे. या फिर 3 tail. सिर्फ एक ही केस है. Probability. 8 में से कितने केसेस में tail है ही नहीं, सिर्फ एक केस में. So this is 1 by 8. 1 tail, 3 by 8. 2 tail, 3 by 8. 3 tail, 1 by 8. Okay. This is the number of tails. This is your required probability distribution. Now, the next one. Number of heads in 4 tosses of coin. Number of heads in 4 tosses of coin. So sample set is head, 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 head. अब यहाँ पे ना एक कॉइन टॉस किया तो 2 आउटकम आते हैं, 2 कॉइन टॉस किया तो 4 आते हैं, 3 किया तो 8 आते हैं, तो 4 करेंगे तो 16 आउटकम. So we'll actually have 16 outcomes. And the outcomes will be head, 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 tail, head, head, tail, tail,
Head, tail, head, tail. Head, tail, head, head. Tail, head, head, head. Head, head, tail, head. Head, tail, head, head. And these are all different outcomes that we will get. Head, tail, tail, head. Tail, tail, head, head. Tail, head, tail, head. Tail, head, head, tail. Head, tail, tail, tail. Tail, head, tail, tail. Tail, tail, head, tail. Tail, 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 head. 3 tails and head has not come. 3 heads and tail has already come. And the last one is tail, 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 tail. These are all the 16 outcomes. See, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 आ गया. कुछ एक double हो गया है. Head, head, head. Triple head, tail. Head, head, tail, tail. Head, tail, head, tail. Head, tail, head, head. हाँ, ये head, tail, head, head मैंने 2 बार लिख दिया गलती से. So these are 16 outcomes. Now, if X represents number of heads, then value of X will be no head, 1 head, 2 head, 3 head, 4 head. Probability. No head का एक ही probability है 1/16. 1 head का कितने इसमें सिर्फ एक ही head है 1, 2, 3, 4. तो ये 4/16 हो गया. 2 heads कहाँ कहाँ पे है 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो 6/16 हो गया. 3 heads 1, 2, 3, 4. 4/16 हो गया और 4 heads 1/16. If you add, you will get it 16/16. That is 1. Now this is your required probability distribution.